This is our privilege to have Dr. Hemanth Kamble sir with us to talk on cataract surgery in corneal opacity. Sir is a senior cataract, cornea, and refractive surgeon. He has been trained from AIIMS. He did his MD from AIIMS and also the senior residency in cornea, cataract, and refractive surgery from AIIMS. And I think we'll go directly to the presentation, sir. Thank you, Kaushik. Am I audible, Kaushik? Yes, sir. Yes, Dr. Hemanth, you are audible. Good morning, sir. Good morning. Yeah, good morning. Welcome to the class. Thank you, sir. So this is going to be a small presentation on cataract surgery and corneal opacities. So corneal transplant is the ideal treatment in significant corneal opacity. If there is a cataract which is present along with corneal opacity, corneal transplant along with cataract removal, that is PK triple, is going to be the treatment of choice. PK triple or a DSEC triple is going to be a treatment of choice. But there are going to be some occasions, some instances wherein a surgeon might want to do only a cataract surgery in corneal opacity. So if a patient has a deep corneal vascularization, presence of deep vessels in 2 or more quadrants, in that case, there is a very high chance of graft rejection in the post-operative period. So in this cases, just a simple cataract surgery might be helpful to the patient. Patients who have, poor ocular surface, presence of severe dry eye, patients with SJS, in them cataract surgery might be an option. And in our country, sometimes poor corneal availability can also be. Patients who do not want to undergo a corneal transplant are okay with only some ambulatory vision might also be good patients for cataract surgery in corneal opacity. But then you cannot do cataract surgery in all patients of corneal opacity. If the patient has a total corneal opacity, there is no way you can do a cataract surgery. Large central corneal opacities, patients who have endothelial pathologies, patients who have PBK, Fuchs. So in these patients, your endothelium is compromised. The corneal opacity is going to increase with time. And in these patients, doing a cataract surgery is obviously not going to be very helpful. And then there are patients who are not, willing for the ambulatory vision. In presence of cataract, in presence of corneal opacity, the vision which the patient is going to acquire after cataract surgery is going to be a compromised vision. Depending on the opacity, the vision might be good to maybe just ambulatory. So the patient needs to be told before cataract surgery that this is the prognosis of cataract surgery, and the patient should be okay with that amount of vision that he is going to receive. So when you are going to do a cataract surgery, there are 3 options. You can either go with a phaco emulsification, SICS, or a extracapsular cataract extraction also, depending on a few factors, location and density of corneal opacity. So if it's a very small corneal opacity in the periphery, you can easily go ahead and do a cataract surgery with phaco emulsification and placing a foldable lens into the back. When you have large corneal opacities or central corneal opacities, depending on the surgeon preference, with a ECC or a SICS might be a good option. Pupillary dilatation will also play a big role. Poorly dilating pupil, you might have to use iris hooks or maybe go in for just a ECC or a SICS. Very hard cataracts also will tilt our, preference to SICS or ECC. So are there any basic principles? Yes, there are a few key principles here. Unlike normal cataract surgery, local anesthesia or a peribulbar block is going to be very useful in these patients. Many times you don't know what to expect once you enter inside the eye. The pupil might be floppy, there might be some adherent glaucoma, there might be chances of zonular dehiscence and zonular weakness also. So local anesthesia is going to be a friend. It is always preferable to operate these patients under local anesthesia. Staining the capsule is going to be very helpful because your cornea is not very clear. Your visibility is going to be poor. The retroillumination is not going to be very good like in normal cases.
So staining the anterior capsule with trypan blue is a must in these patients. In my career, what I've found is that the site of main wound where you make a 2.8 or 2.2 incision is going to be very useful, very helpful. What needs to be taken care of is that the opposite quadrant has to be clear, especially whenever you're doing a phaco emulsification. Whenever we chop, or most of the manuals that we do in phaco emulsification are in the opposite quadrant. So suppose if I'm making a temporal corneal incision, I'll have to make sure that the nasal quadrant is free. Or suppose if only the inferior quadrant is clear, we'll shift from a temporal incision to a superior incision, because that is going to if the pupil is small, pupillary sphincterotomy or optical iridectomy, iris hooks, whatever is required needs to be used while operating these cases. Rhexis needs to be started in the quadrant where the cornea is clear. This is very, easy to understand. Wherever the cornea is clear, you'll have to start a rhexis there. Under the opacity, what we've been taught is that you never let go of the rhexis. Use a forceps or an intravitreal forceps wherever required. See, once the rhexis goes under the opacity, it is very difficult to find the end of the rhexis. And then a bad rhexis is going to lead to a very difficult cataract surgery. So one of the key principles of any cataract surgery, whether it be a normal cataract surgery or the one where corneal opacity is there, is a good rhexis. Good, preferably a large rhexis also. If you're going to do a SICS or a ECC, even if a CCC is not possible, a large TOMI along with relaxing incision is also going to be helpful. Other thing is to use a viscodispersive, viscoat or a similar, an agent to prevent the endothelial damage. So we have a few videos here. So this is the first video in which patient has only some amount of temporal corneal opacity. So in this, the nasal quadrant is free, and this is going to be like a routine cataract surgery. I've not even blocked this patient, but yes, you can. So in this patient, cataract surgery is going to be a typical normal phaco emulsification. So this is another patient in whom the patient has, this is the nasal side, a nasal corneal opacity. Instead of making a temporal incision, what I've done is I've gone ahead and made a superior corneal incision. This is because the opposite quadrant, that is the inferior quadrant, is free. Had I made a temporal incision, this opacity would have come into my view. So this was the patient where we made a superior incision, and then rest of the surgery remains more or less the same. So we start the rhexis in the quadrant which is clear. And then do a normal phaco emulsification. While making an MVR, I'm trying to avoid the area where there's corneal opacity, and there's some ardent glaucoma here also. So this is a next patient which I operated, in which there is a small central corneal opacity, NMCO, along with a diffuse corneal opacity around it. So in this patient, we've made a temporal incision, made all the side ports, we've stained the eye, stained the anterior capsule. What needs to be taken care of is that the rhexis is slightly bigger than the corneal opacity. And the rhexis is bigger in the nasal quadrant because that is where we are going to chop the cataract. So the rhexis is slightly larger than the corneal opacity, and we are going to chop in the clear area so that visibility is good. You don't chop or you don't do any maneuvers directly underneath the corneal opacity. Otherwise, apart from this, the cataract surgery remains the same. And you implant the lens in the neck. So this is another corneal opacity patient in which there was significant central corneal opacity,
and the pupil was relatively non-dilating. There was some adherent glaucoma also. So that rather than doing a phaco-emulsification, I went ahead and did a SICs in this patient. So after making a superior tunnel and making an entry into the anterior capsule, into anterior chamber, what I did was first was that we decided to remove the adherent glaucoma in this patient. So we went ahead with the angled vanas in this patient. Oh, sorry. We went ahead with the angled vanas in this patient. And we just removed the adherent glaucoma here. And we did some sphincterotomy here. So doing a sphincterotomy gave us adequate visibility to make the rexus. We are starting the rexus in the superior quadrant because that was the quadrant where there was maximum visibility. I lost the rexus in the inferior quadrant. So we completed the rexus using intravitreal forceps. Once the rexus was done, we prolapsed the nucleus into the anterior chamber, and we have just removed the nucleus. So these videos are obviously edited videos. Surgery times in these patients is not going to be the same. They will require a lot of patience, and these surgeries do take time. So there was this another patient who had a mature senile cataract along with inferior and some inferotemporal corneal opacity. So what I had did was I had planned for a ECC, and therefore I made a superior incision. Otherwise, a temporal incision would have been better in this patient because the nasal area was relatively clear. After completing the rexus, I thought I'll just go ahead and try a phaco emulsification in this patient. The pupil is slightly on the smaller side, but I thought I got away with this. Many times it is better to use a iris hook in such patients. So even if some amount of or thoda sa cortical matter remains, it is not going to be a problem in these patients. It is very difficult to get rid of each and every cortical matter in these patients. So this is a controversial patient. This patient had a large central paracentral corneal opacity, and he had some deep vascularization in two quadrants. Other eye was 6/6, so we decided to avoid a corneal transplant and we went in for a cataract surgery. Patient had significant cataract for sure. Because the visibility was poor, what I did first was I used a 20 gauge cutter to eat some part of the iris. Once the visibility was adequate, no way I could do a phacoemulsification in this patient. So we did a capsulotomy, relaxing incisions, and then delivered the nucleus. Secured the cornea with sutures, did some bimanual lens aspiration so as to get rid of some of the cortical matter which was there. And then placed a 3-point large 3-piece lens in the bag or the sulcus, whatever is present. So this was a patient which I had operated in when I was in Varanasi with ASG. So as you can see in this picture, patient has large vessels. These are deep as well as superficial vessels. He was a one-eyed patient and he was not willing for cataract surgery. Sorry, he was not willing for a corneal transplant. Patient was born with this corneal opacity. The other eye had total corneal opacity. So the vision of this patient was never more than
counting at few meters. When he presented to us, he presented with a NS4 cataract, and the vision was hand movements close to face. So we had two options here. One was to go ahead and do a PK triple, but PK triple with in an amblyopic, I was going to give him only ambulatory vision. So I decided maybe we should just go for a cataract surgery and see how it goes. So made a superior incision. Again, like last patient, this patient has adherent glaucoma. So we remove the iris. We try to remove the iris using one angle vanas. Put some viscoelastic in the anterior chamber and use a 23 gauge cutter to remove some part of the iris. So this is the superior side. For patient to have ambulatory vision, inferior iris, patient needs to have a OI inferiorly. So even after staining the anterior capsule, I was not happy with the inferior iris. So what I did was we went ahead and did some iridectomy, removal of iris in the inferior quadrant also. Did a TOBI, capsular TOBI, because obviously Rexis was not possible. CCC was not possible. Gave some relaxing incisions. Relaxing incisions are very important here because if the Rexis is small, when you remove or when you deliver the nucleus, there are high chances that it is going to come with back. So you deliver the nucleus, the back seems to be there. So you take some stay sutures and do bimanual irrigation aspiration. Remove as much of cortical matter as you can remove. Now there is a retro illumination which is available, retro glow which is available. So place a 3-piece IOL in the bag or the sulcus and just close the wound. So here I had already explained the patient that we will try for a cataract surgery. If the vision post cataract surgery is not as per his or my expectation, we might have to go ahead transplant later. But this patient had around 3/60 vision post cataract surgery. So cataract surgery is a useful procedure in patients with corneal opacity and significant cataract. It is going to provide ambulatory vision, but it is going to be a long-lasting vision. There are no chances of rejection. A good cataract surgery in significant corneal opacity will lead to a lifetime vision to these patients. Associated spectrotomy, optical iridectomy are going to be very useful procedures. These surgeries are not for every surgeon. You need to be good at cataract surgery. You need to be, aware of your own limitations. Not every surgery is going to be the same. And there are many times you are going to be, you'll have to abandon the procedure. You have to change your procedures. You'll have to shift from phaco to maybe SICS or to ECC also. Thank you. Thank you, sir. It was I think it was very demanding cases, very challenging cases. Actually, sir, इसमें एक फ्यूक्स वाला केसेस एक दो अगर आपके वीडियोस हैं फ्यूक्स के फ्यूक्स का मतलब पूरा डिकम्पेंसेट नहीं किया एंड ऑल्सो वी वांट टू नो हाउ टू प्रोसीड विथ केसेस विथ एक्सटेंसिव गट्टे मतलब व्हाट शुड बी आवर प्रोटोकॉल की कैसे प्रोसीड करें ऐसे केसेस में कैटरैक्ट विथ कॉर्नियल गट्टे हाँ गट्टे वहां पे ना कौशिक द प्रोसीजर्स विल रिमेन द सेम आपका सेंट्रल कॉर्नियल ओपेसिटी होगा है ना विजिबिलिटी इज गोइंग टू बी पुअर सो दो चीजें होंगी एक तो पेशेंट को ब्लॉक करोगे दूसरा डाई यूज करना ही है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विस्कोइलास्टिक द ओपेसिटीज आर नॉट गोइंग टू बी वेरी डेंस बहुत डेंस ओपेसिटी तो नहीं होगा दिखेगा आपको बट obviously it is not going to be as clear as in a normal surgery retro illumination बहुत poor होगा
सो ब्लॉक करना इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ब्लॉक एंड डाई यूज करना, सॉरी। नहीं, ऐसे केसेस में कौन सी केसेस को सीधा ही मतलब वी कैन सेंड इट फॉर डीमेक प्लस कैटरैक्ट और डीसेक प्लस कैटरैक्ट, मतलब व्हाट इज तो द? उसमें, हाँ, तो corneal thickness is going to play a very important role. Any corneal thickness more than 650 millimeters, preferably we should go ahead and do a a triple surgery, maybe a DSEK triple or a PK triple. है ना? कुछ एनी एक अभी अदर? बीच में एक दो पेशेंट्स थे जिनमें कॉर्नियल ओपेसिटी इससे भी ज्यादा थी। देयर वाज अ पेशेंट जिसे ना पिछले साल कैटरेक्ट वो था प्लस फ्यूक्स था। मैंने डीसेक ट्रिपल एडवाइस किया था, पेशेंट एक साल के लिए गायब हो गया, अभी वापस आया इस साल। पेशेंट वाज नॉट विलिंग फॉर अ डीसेक, तो आई ऑब्वियसली वेंट अहेड एंड डिड जस्ट अ कैटरेक्ट सर्जरी, बट फिर विजन उसमें कॉम्प्रोमाइज रहेगा। पेशेंट का विजन 680 नहीं आया है, दो लेकिन पेशेंट इसमें का। हम लोग जो कर रहे हैं 560 या ऐसे के ऊपर ही होता है तो भेज देते हैं, क्योंकि एक्चुअली आवर एक्सपीरियंस हैज नॉट बीन ग्रेट। तो ऐसे केसेस में जिसमें एक्सटेंसिव गट्टे हैं, पिगमेंटेशन है इन द पोस्टीरियर एंडोथेलियम, तो क्या हुआ ना, मतलब मैंने जितना भी देखे हैं या मेरे यहाँ पे जो कंसल्टेंट्स हैं, दैट डिड नॉट क्लियर एक्चुअली द cornea did not clear even if the preoperative corneal thickness on OCT was around 520 530. 520 तो नॉर्मल हो गया कौशिक। हाँ, लेकिन बट इट वाज लाइक देयर वाज एक्सटेंसिव गट्टे। तो मतलब हाँ स्टैंडर्ड जो सीसीटी है वो कितना, मतलब कितना के ऊपर अगर होगा तो डिसेक इज एडवाइस 615 और 640 और See, ना, अबाउट द डीसेक इज एडवाइज्ड ओनली, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। बस देखो, अगर हमें अगर सपोज तो पेशेंट मेरे पास भी भेजता है, मुझे भी डीसेक ट्रिपल करना हम्म है ना, मुझे भी तो कैटरेक्ट निकालना ही होगा। हम्म अगर तो कैटरेक्ट निकाल के मेरे पास भेजता है, स्टिल द सर्जरी इज गोइंग टू बी इजियर फॉर मी। यस ना, तो प्रॉब्लम क्या इफ यू, है, ये जो मतलब like counseling the patient becomes a challenge, even though you explain that yes you will need cataract surgery, may need penetrating कॉर्नियल cataract ट्रांसप्लांट or या, endothelial transplant, but after the surgery is done they will be like nagging कि why has not my vision has is not improving, क्या क्यों नहीं हो रहा है? तो this is the difficult situation we which we faced. हाँ वो दैट आई एग्री कौशिक, दैट आई डेफिनेटली एग्री विथ यू कि यहाँ पे इन सारे पेशेंट्स में काउंसलिंग इज गोइंग टू बी द की रोल, है ना। अब very true. इतना कॉर्नियल ओपेसिटी है, अगर मैं बोल दूं यार कि 6/6 विजन आएगा या 6/9 या 6/12 आएगा, तो काउंसलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट आई अग्री। जनरली व्हाट आई डू हियर इज, मोस्टली इन मोस्ट पेशेंट्स आई गिव पेशेंट टू चॉइसेस। एक तो हम सारी प्रोसीजर एक साथ करेंगे, और आपका नसीब है, विल ट्राई फॉर कैटरेक्ट सर्जरी। इफ योर विजन इज रीजनेबल, यू आर हैप्पी विथ योर विजन, विल एंड इट ओवर देयर। वी माइट वेट, सी, अगर कॉर्नियल का थिकनेस 600 है ना, द स्पेकुलर काउंट इज गोइंग टू बी लेस देन 500, है ना कौशिक। In that patient, you do a phacoemulsification, patient is going to be okay for the next 1 or 2 years. एक बार endothelial count goes very less, patient will have to go ahead and do a DSEK or a DMEK. So इसलिए मैंने लिखा था कि फ्यूक्स में, या these are progressive disorders, जैसे ये पेशेंट है, इसमें तो सेंट्रल ओपेसिटी है, जो है वो तो इतना ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज फर्दर। बट प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स, फ्यूक्स है, और ये सारे केसेस में टीबी के हैं जहाँ पे एंडोथेलियल सेल और कम होते जाएंगे, प्रेफरेबल है टू डू अ ट्रिपल ओनली। See, I would like to add my experience. यस सर। डॉक्टर हेमंत के साथ भी हमने ऐसे केसेस काफी मिलके हैंडल किए हैं एंड अभी भी कर रहे हैं। तो व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड इज कि हम इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं कि अगर ऑलरेडी कॉर्निया डिकम्पनसेटेड है, जो कि जैसे डॉक्टर हेमंत ने कहा 650 से ज्यादा कॉर्नियल थिकनेस है, एंड यू सी सिग्निफिकेंट हेज एंड कॉर्नियल डिकम्पनसेशन, देन यू शुड एंड यू कैन प्लान अ कंबाइंड सर्जरी। ऐसा केस जहाँ पे कैटरेक्ट पॉसिबल है करना और इतनी क्लैरिटी है, तो यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्रायल ऑफ दिस थिंग। ये इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि अगर कैटरेक्ट पॉसिबल है तो कैटरेक्ट कर लो पहले, एंड यू शुड ऑलवेज कीप इट अ प्लान कि ये तो करना ही है, यानी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, चाहे वो आप डीसेक कर रहे हैं। द थिंग इज कि प्लानिंग इट टुगेदर शुड बी ओनली इन सच केसेस वेयर कॉर्निया इज वेरी अनहेल्दी और वेरी पुअर कंडीशन में है, क्योंकि अगर आप सेकंड स्टेज में करोगे तो जैसे डॉक्टर हेमंत ने बताया, उनके लिए वो कंफर्टेबल है, इजी है।
तो आप शुरू से ही 2 स्टेज प्लान करके रखेंगे तो बेटर है, अगर आप कैटरेक्ट फर्स्ट स्टेज में कर पा रहे हैं तो। एंड दैट कैन ऑलवेज बी अ बेनिफिशियल थिंग फॉर द पेशेंट, कि अगर कॉर्निया सर्वाइव कर रही है या आप कॉर्नियल ट्रांसप्लांट फर्दर डिले कर पा रहे हैं, तो पेशेंट कैन बी मोर कंफर्टेबल कि हाँ, मुझे बता रखा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी कॉर्निया ट्रांसप्लांट होगी, यानी डीसैक होगा, और अगर उसके बिना उसका काम चल रहा है तो वो मोर देन हैप्पी रहेगा। तो इसलिए काउंसलिंग इतनी अपने को पहले से ही सिंप्लीफाइड रखनी है अपने दिमाग में भी, तो पेशेंट भी कुछ नहीं कहेगा और वैसा भी कुछ नहीं होगा। ऐसा हमारे पास केस के 2-3 एग्जाम्पल हैं। एक पेशेंट था जिसको फर्स्ट टाइम में वी डिड अ कंबाइंड सर्जरी, एंड व्हाट हैपेंड वाज कि डीसैक उसका फेल हुआ, एंड देन वी हैड टू रीडू दैट। रीडू करके वो ठीक ठाक कंडीशन में पहुंच गया, बट जब हमने सेकेंड आई करी तो कॉर्निया रिलेटिवली ठीक था, इतना पुअर नहीं था, और उसको काउंसल्ड भी है, उसको पता भी है जर्नी अदर आई में क्या रही थी। इस आई में अभी सिर्फ कैटरेक्ट किया है, विस्कोट डाल के किया है, सेफली किया है, इन द बैग सर्जरी की है, सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक्सपीरियंस सर्जन ने किया है, मिनिमम टाइम में किया। अभी कॉर्निया चल रही है और उसको डीसैक की ज़रूरत नहीं है और वो पेशेंट बहुत खुश है। तो ऑलरेडी और ऑलवेज प्रायरली अगर समझा के रखेंगे कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट की ज़रूरत रहने वाली है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि सिर्फ कैटरेक्ट में कुछ प्रॉमिस करें। एम आई राइट डॉक्टर हेमंत? Yes, sir. Actually, there have been a few studies now, ना सर, जहाँ पे उन्होंने देखा है कि इन आफ्टर 10 years of corneal transplant आपका एंडोथेलियल सेल काउंट कितना होता है। कौशिक, आई थिंक तुझे पता होगा। सो इन दीज स्टडीज ना सर, दे फाउंड कि 10 साल के बाद आपका कॉर्निया का स्पेकुलर काउंट इज एज लो एज 500 इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट। कहने का मतलब ये है यस। कि कॉर्नियल यस। ट्रांसप्लांट का एक लाइफ होता है। सो एवरेज लाइफ इज गोइंग टू बी अराउंड 10 to 12 years इन अ गुड सर्जरी सर, अगर कोई रिजेक्शन नहीं होता तो। सो यंगर पेशेंट, अगर आपके पास यंगर पेशेंट आता है, पेशेंट इज 40-30 विद कॉर्नियल ओपेसिटीज, अगर आप एक्सपेक्ट करो कि अम्बलायोपिया होगा तो होगा ही पेशेंट को, इन दीज पेशेंट सिंपल कैटरेक्ट सर्जरी इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करेंगे बट जब जरूरत होगी, जहाँ पे उसका काम बिना उसके काम हो ही नहीं सकता, आई थिंक इन दीज पेशेंट ओनली कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हैज टू बी डन सर। अगर जहाँ अवॉइड कर सके बेटर है, वो डाउट ही नहीं है। Any more comments or queries? Dr. Anup? Dr. Prasant? तो सर आपके स्टेप्स में डेप्थ ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी से कोई चेंज आता है क्या सर्जिकल स्टेप्स में या फिर उसमें? नहीं सर, नहीं डेप्थ ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी पे कोई डिफरेंस नहीं आता। See, visibility will remain the same whether it's a superficial corneal opacity or a deep corneal, total corneal opacity. The only thing what is going to change is if there is a presence of adherent glaucoma. अगर adherent glaucoma है, releasing the adherent glaucoma using maybe a Vanas or a 23 gauge vitrectomy cutter is going to be helpful for increasing the visibility of the at the time of surgery and maybe. ओके। और प्री ऑप में आप कुछ चेंज करते हो क्या प्रोटोकॉल्स में, मेडिकेशंस में, या प्री ऑपरेटिव या इंट्रा ऑपरेटिव फॉर कॉर्नियल ओपेसिटी पेशेंट्स? Generally, nothing changes in these patients. डॉक्टर हेमंत, डिकम्पनसेटेड कॉर्निया है एंड अपीयर्स की ये डिकम्पनसेशन की ओर जा रहा है, करीब NS3 NS4 है, तो व्हाट वुड बी योर चॉइस कि विल यू गो फॉर SICS और सिंपल फेको? इज देयर So एनी योर चॉइस? सर देखिए, दिस विल डिपेंड ऑन द कॉर्नियल कंडीशन सर। अगर कॉर्निया का थिकनेस इज रिलेटिवली ओके, 550 है, 560 कॉर्नियल थिकनेस है, ओके, एंड NS3-4 कैटरेक्ट है, SICS is going to be a good option sir, because in these patients you are not going to use any phaco energy. right. है ना? Yeah, even I prefer कि इसमें if it is more than NS3 and it looks like decompensated, then SICS becomes is a a good better option. Yes. But sir, ये ना surgeon preference है. Many times I am not very comfortable in SICS. Given a choice, I'll always prefer phaco. But Okay. yes, SICS is a very good surgery.
Yes. Sir, I feel the answer lies in the question only. It should be surgeon's preference. Okay. एंड आप किस में कंफर्टेबल है उस पर डिपेंड करेगा डेफिनेटली। कुछ लोग इतना अच्छा SICS करते हैं कि बिल्कुल ही उसमें कॉर्निया को डिकम्पनसेट करने के फैक्टर्स बढ़ेंगे नहीं, तो उनके लिए वो अच्छा है। एंड फ्यू पीपल माइट डू फेको वेरी वेल, Very well. Right. और वो उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे तो फेको कर With very लेंगे। less energy, they can complete the surgery. हाँ, एनर्जी है, टाइम है सर, और Time कंफर्ट है. है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, एंड इस कोड तो यूज करना ही है, Right. इन एंड आउट What ज्यादा नहीं होना चाहिए। what I usually do is that अगर कुछ इनिशियल फ्यूक्स के साइन दिख रहे हैं, थोड़ा कॉर्नियल डिकम्पोजिशन में जा रहा है, 1000 के आसपास का काउंट है या 1500 के आसपास का, आई विल recommend patient to go cataract surgery in early stage only, because the results will be easy, further decompensation का चांस भी कम रहेगा, आउटकम भी अच्छा रहेगा पेशेंट के लिए। तो मतलब वही है कि काउंसलिंग कम्स लिटिल हैंडी इन दैट। पेशेंट को बहुत काउंसिल करना पड़ता है कि व्हाई डू यू वांट टू ऑपरेट अर्ली। समटाइम्स पेशेंट विजन विल बी 6/9 6/12 ओनली, NS1-2 में भी होगा। तो अगर वो अर्ली कर लेते हैं तो उससे आई थिंक थोड़ा इम्पैक्ट चेंज हो जाता है, rather than waiting for लिटिल significant deterioration of vision. Right. Right. Yes, definitely. Early surgery is always a good answer, and for that you need to counsel them very well. Any more queries? आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी डॉक्टर हेमंत, जैसे हमने देखा कि एसकेज बहुत परसिस्ट कर रहे हैं, कॉर्नियल एडिमा परसिस्ट कर रहा है, तो कितना ड्यूरेशन अपन वेट करेंगे सर्जरी के बाद बिफोर रेफरिंग फॉर पेशेंट फॉर ट्रांसप्लांट आइदर डिसैक और केराटोप्लास्टी? 3 months, sir. 3 months का प्रोटोकॉल है. 3 We months. at least wait for 3 months, sir. And hyposol ointment drop, कोई एक एंटी ग्लोकोमा ड्रॉप है ना, फिर कॉम्बिगेन या ट्रूकॉम. अलोंग विद दैट सर अभी रिपासोडिल अवेलेबल है. Okay. रिपासोडिल अभी व्हाट वी स्टार्टेड हियर इज दैट कॉर्नियल अगर फ्यूक्स वाले पेशेंट आते हैं तो वी स्टार्ट रिपासोडिल द फर्स्ट टाइम दैट वी सी दीज पेशेंट्स, सर. In the long run, sir, ये जो रो काइनेज इनहिबिटर्स है ना, they have shown to be good in a few patients. I've had good experience with ripasudil, sir. So अभी फ्यूक्स वाले पेशेंट में I do start ripasudil. So हम लोग जो नॉर्मली ट्रोकॉम देते थे to decrease the intraocular pressure post surgery, अभी shifted to ripasudil, sir. Okay. सर ये रिपासुडिल का जो है उसका तो मतलब एक साइड इफेक्ट ही है, कॉर्निया में ऐसे टाइप का हो जाता है, हनीकॉम टाइप का, तो ये कैसे हाँ व्हाट इज द होता है. थिंग? तो उससे बट खुद से ही तो प्रॉब्लम हो सकता है, और कुछ लोग हाँ तो PB के लिए यूज कर रहे हैं या पोस्ट ऑपरेटिव कॉर्नियल डिकम्पनसेशन यूज कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज आई एम आस्किंग व्हाट इज द रेशनल फॉर दिस? so actually ripasudil ना Kaushik does not act with everyone यार, हम्म frankly, है ना. साइड इफेक्ट्स भी है, रेडनेस, स्टिंगिंग, बर्निंग भी काफी पेशेंट में होता है. बट जिसमें अच्छा इफेक्ट आता है ना, इट डिलेज कॉर्नियल ट्रांसप्लांट. इट इज नॉट गोइंग टू प्रिवेंट, बट फ्यूक्स में या PBK वाले पेशेंट में अर्ली केसेस में, इन अर्ली केसेस इट इज गोइंग टू डिले. इज और नॉट फॉर सर एवरी पेशेंट. एक देखा है कि जो टास होता है, टास टाइप का इमीडिएट पोस्ट ऑफ कैटरैक्ट वाज लाइक नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, पावर वाज नॉट यूज्ड हाई, लेकिन फर्स्ट पोस्ट ऑफ पूरा कॉर्नियल इडिमा है, पूरा व्हाइट है, एंड विथ आर्टिफिशियल अरे hypertonic saline steroids etc, it resolved in around 1.5 months, विजन 6 आ गया, बट बाद में वो दोबारा डिकम्पेंसेट हो गया। ये कितना कॉमन है? ये हमारे साथ हुआ है, देयर आर 2 or 3 लाइक dissatisfied patients like this कि पहले immediate post op it was very hazy, then we thought TAS किया, IBMP दिया, उसके बाद ये करके hypertonic saline steroid, ये oral steroid, ये सब देके he regained the vision to 6/6 parts or 6/6 at around 1.5 months, and then after 1 year or so they are coming back with this like PBK frank. तो ये कितना कॉमन है? नहीं कॉमन तो नहीं है. कौशिक, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम जब कॉर्नियल एडिमा हुआ था या टास हुआ था ना, दैट टाइम तेरा एंडोथेलियल सेल लॉस सिग्निफिकेंट था, है ना. आप स्टेरॉइड्स देके आपने टेम्पररी उसे ठीक किया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली एंडोथेलियल सेल लॉस होता है, पेशेंट एंडेड विद PBK, है ना.
सो इन दीज पेशेंट फर्स्ट तो यार तुम्हें यही आइडेंटिफाई करना है टास्क क्यों हो रहा है. टास्क इज नॉट अ एवरीडे थिंग ना. टास्क होना इज अ वेरी बिग 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 प्रॉब्लम. टास्क अभी बीच में कुछ लेंसेज की वजह से टास्क हो रहा था कौशिक. I think we've stopped using those lenses. The other very important reason for task is viscoelastic. है ना? If your cannulas have not been cleaned properly and have been, autoclaved, the viscoelastic becomes hardened, and it is that viscoelastic which is, one of the factors leading to task. So, agar task हो रहा है, the first thing that I would do at my place is to maybe replace all the cannula. Other thing which has been reported is betadine use. है ना? इंट्राऑक्यूलर अगर बीटाडीन थोड़ा भी इंट्राऑक्यूलर चला जाए, बीटाडीन इज वेरी टॉक्सिक टू द एंडोथेलियल सेल्स. We at all our centers now we are using betadine. It has to be used, but it has to be washed properly. Even a single drop of betadine, if it goes inside the anterior chamber, it will definitely 100% lead to TAS. In that case, your endothelial cells are going to get damaged. They will recover, but they're damaged. So there is always a chance that 2 years, 5 years, 4 years down the line, patient might end up with PBK. थैंक यू सर. एनी मोर कमेंट्स? फेलोज कोई? फेलोज का, हमारे फेलोज का कोई क्वेरीज नहीं रहता है. दे नो एवरीथिंग. They know and they are quite comfortable. दे विल डू लाइक ये जो कैटरेक्ट आपने किया सर, एक्चुअली दे आर वेरी डिफिकल्ट. देख के ही डर लगता है कि ऐसा हो गया. एक्चुअली वेरी वेरी चैलेंजिंग केसेस. हाँ कौशिक, इसमें ना काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं तो कई बार बोलता हूँ देर आर चांस की चलो और एक वीडियो मेरे पास, एक और एक वीडियो दिखाता हूँ इफ यू गाइस आर. तो एक ये ना एसजीएस वाला एक पेशेंट है, दिख रहा है क्या वीडियो? हाँ सर. Yes, it's visible. हाँ. You can सो start. देयर इज दिस पेशेंट ना सर, ये वन नाइट लड़का था, Hmm. 16-17 साल का था. पेशेंट हैज एसजीएस. Yeah. अब एसजीएस के बाद पेशेंट वाज फॉलोइंग अप विद अस फॉर ऑलमोस्ट 3 इयर्स. जब से मैं पुणे शिफ्ट हुआ तब से मेरे पास पेशेंट को पीएचसी था. पेशेंट का विजन विद पीएचसी वाज अराउंड 3/60. अब ये पूरा एमएससी हो गया, मैच्योर. Oh. इंट्यूबेशन कैटरेक्ट था. Hmm. पेशेंट का विजन हो गया फिंगर काउंटिंग, एंड ये लड़का कॉलेज. तो अब कैटरेक्ट सर्जरी कर दी इसमें. तो मैंने सोचा ठीक है विजिबिलिटी सी. हाँ, एक और चीज था जो मुझे लगता है, जो मेरे एक्सपीरियंस में है, कि विजिबिलिटी जो आपको लगती है स्लिट लैम्प पे होगी, स्लिट लैम्प वो गिव्स यू कम हो मच जाता है. बेटर. सर्जरी सर्जिकल हाँ टाइम भी Microscope पे, बहुत कम हो हाँ, जाता है. बहुत वो बड़ा फैक्ट है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. So slit lamp, because it is a slit, ना, it gives you very good visibility. Whenever you are operating under a microscope में diffuse illumination होगा, visibility becomes much less. तो और सर इस पेशेंट में और एक इशू है, बीटाडीन जब डाल के रख देते हैं ना, वो कुछ कुछ केसेस में करते हैं, वो और खराब कर देता है. और ज्यादातर देखा है कि प्री ऑप वो जो बीटाडीन अगर बहुत ज्यादा रख के रख दोगे तो एपिथेलियम में ऐसे मतलब डॉट डॉट हेज डॉट हो जाता टाइप है. का बन जाता है. हाँ हाँ एंड हाँ बिल्कुल हाँ. बिल्कुल इट मेक्स पूरा. द सर्जरी वेरी डिफिकल्ट. तो Just like कौशिक, बीटाडीन का exposure. कॉन्टेक्ट टाइम इज ओनली 30 seconds. Hmm. Ideally, betadine का contact time should not be more than 30 seconds, and only 5% betadine has to be used. 10% Yeah, is used for skin. yeah. हाँ 10% तो 5%. स्क्रब वाला होता है. Yes. हाँ सर 10% स्क्रब के लिए होता है. अगर वो आप कॉर्निया में डालोगे तब तो इट इज गोइंग टू कॉज कॉर्नियल डैमेज. Yes. Yes. तो इस पेशेंट में मुझे लगा ठीक है, कॉर्निया तो दिख रहा है, कॉर्निया ठीक है, कैटरेक्ट भी दिखाई दे रहा है, विल गो अहेड एंड डू अ कैटरेक्ट सर्जरी. बट प्रॉब्लम ये हो गया कि एक तो पूरा साइनिक के बने हुए हैं और सिम्बलिफ्रॉन है. मैं रेक्सिस बनाने जा रहा हूँ, रेक्सिस तो दिख ही नहीं रहा है मुझे. सो सॉरी. तो एसी पूरा शैलो हो गया, है ना. विस्कोइलास्टिक डाल के रेक्सिस मैंने कहीं तो स्टार्ट की, बट विजिबिलिटी वाज वेरी पुअर. फिर मैंने फोर्सेप्स लिया, ये अपना इंट्राविट्रल फोर्सेप्स है. अब जैसे मैंने पुल किया, यू सो यहाँ पे आइरिस भी पुल हुआ, देखना. जैसे इससे पुल करते हैं आइरिस भी पुल हुआ. सो रेक्सिस पेरीफेरी में जा रहा था. सो देयर वाज नो ऑप्शन. फिर मैंने रैंडमली कैप्सुलोटोमी किया. इतना रैंडमली था कि यार आई वाज लाइक
पता नहीं क्या ही करेंगे, बिकॉज इस पे तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना भी पॉसिबल नहीं है इस बच्चे में। रैंडमली कुछ करके कैसे भी निक्स देके बायोमैनुअल एस्पिरेशन कर लिया। लकीली बायोमैनुअल एस्पिरेशन अच्छा हो गया। Even the cataract na, though it was intubation, cataract was not very fluffy because ये inflamed complicated kind of cataract है। cataract भी ऐसे थोड़ा सा hard हो गया था, but कैसे कैसे करके हो गया, and we were able to put a lens in the bag, I think। एक और चीज जो मैंने नहीं कही ना is like having a backup of a good retina surgeon in these patients। हो सकता है कि you know try for cataract surgery and you know drop हो जाए, कोई piece रह जाए। Having a good retina surgeon who will take care of it is very important। I think Kaushik, you will agree। No, everyone will agree. Yes, sir. That is the most valid point. Whenever you do complicated cases, you ensure that the retina surgeon at your Is center on is standby। here. Yes, on backup. Yes, always. Always। तो होता है इन केसेस में ना, जो आप सोचते हो वो नहीं होता many a times, Very true. but somebody has to do। Yeah, wonderfully done. And it's definitely keeping a good planning and understanding the case, and then um, you have to take a chance. That is a must। हाँ, you have to take a पेशेंट chance। के पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तो जितना भी विजन इसको मिलेगा वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए। ये करना तो है, प्लानिंग अच्छी हो और सारी चीजें बैकअप पे रहेंगी और फिर आप ट्राई करोगे, तभी आप ऐसे केसेस को एज अ चैलेंज पूरा कर पाएंगे। Yes sir। वेरी वेल डन। Thank you so much। एक्चुअली सर बहुत ही बढ़िया ये, मतलब these are very difficult to take also these cases। और ये एक है हाँ ऐसे केसेस में मैंने देखा स्टेनिंग इज बहुत मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ये करके थोड़ा सा बैठ के अच्छा करके स्टेन करना जरूरत है। कुछ लोगों ने इसमें और एक चीज किया है कि साइड से एक इल्यूमिनेटर लगा सकते हो लिम्बास के पास। सैंडिलियर। हाँ, सैंडलियर टाइप का करके, या कभी कभी कोई चेस में भी डाल दिया है, सैंडलियर डाल के किया है, ताकि आपको जो रेक्सिस है या जो रेट्रो है थोड़ा आए। बेटर है। इसमें हाँ हाँ। मैं तो सिर्फ यही ऐड करूंगा, ये पॉइंट तो आपने बोल ही दिया डॉक्टर कौशिक, इल्यूमिनेट करने वाले। आई फील कि रिट्रो भी ट्राई करना चाहिए, एंड जो ओटी के बाकी लाइट्स हैं वो रिफ्लेक्शन को पैदा करती हैं कॉर्निया पे, उनको भी बंद करना चाहिए। तो समहाउ डेफिनेटली। इन सब चीजों से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आप बना सकते हैं, थोड़ी विजिबिलिटी बेटर हो जाती है। सो मैं क्या करता हूँ, डाई को थोड़ी देर एक्स्ट्रा यहाँ पे टाइम दे देता हूँ वॉश ऑफ होने के लिए, तो वो स्टेन कॉर्निया का बहुत थिक आता है कैप्सूल का, तो इवन पुअर विजिबिलिटी में वो कंट्रास्ट और थोड़ा वो सारी चीजें भी थोड़ी इनहेंस हो जाती है, तो रेक्सेस थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ जाती है अपने। हाँ, एंड एट द एंड ऑफ द सर्जरी आई थिंक ना सूचर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्नियल ओपेसिटीज में। मेनी टाइम्स बिकॉज एक साइड कॉर्नियल ओपेसिटी होगी, हाइड्रेशन उतना अच्छे से हो नहीं पाता। सो जहाँ पे भी डाउट लगता है कॉर्नियल ओपेसिटी में, कैटरेक्ट में, यू इवन इफ इट्स जस्ट अ फेको वुंड, यू इट इज बेटर कि आप सूचर लेके उसे क्लोज करो। एनी क्वेरीज फ्रॉम फेलोज? सर ये एडहेरेंट ल्यूकोमा में क्या करना है? अगर पेरीफेरी में है तो मोस्ट लाइकली यू कैन लीव इट, छोड़ नो? दो। हाँ, अगर पेरीफेरी में है, इट इज नॉट कमिंग इन योर विजुअल फील्ड, जस्ट लेट इट गो। अगर मिड पेरीफेरी में है, तो मेनी टाइम्स यू कैन रिमूव द adherent glaucoma यूजिंग अ वानास और इंट्राविट्रियल अपना सीजर्स, ये 23 गेज कटर से। adherent glaucoma निकालने का बस एक एडवांटेज है, प्यूपिल थोड़ा मे बी रेगुलर हो जाएगा, थोड़ा फॉल बैक करेगा, है ना। Any more queries or comments? I think sir today we had a great discussion. Or actually cases were very challenging, and many centers do not have a cornea specialist also. तो उसके लिए मेरे पास जो है cornea specialist है नहीं, तो उसके लिए cornea का जो difficult cases है तो we have to be very careful, और उसके बाद ये करते हैं। एंड आई ऑल्सो थिंक कि हमारे पास जो डिसेक का भी जो
tissue which we get might not be as per the best standards. ये भी एक इशू हाँ, है दैट इज हमारे। ट्रू। वो इशू है, वो इशू है। तो तो आई हम्म, डोंट नो, अभी अभी ना प्री कट टिश्यूज भी अवेलेबल है विच आर स्लाइटली एक्सपेंसिव। अभी मैंने यूज नहीं किया, आई थिंक जोधपुर में यूज हुए हैं। तो प्री कट टिश्यूज एपरेंटली आर बेटर, थोड़ा सा कौशिक, थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा बेटर है। विल ट्राई टू यूज देम। एक्चुअली सर बट हमें लगता है थोड़ा सा ये करके एट एन लाइक इंस्टीट्यूशनल लेवल वी शुड टॉक विद द पीपल फ्रॉम whom we are getting this and we should negotiate to have better like tissues, टिश्यूज, क्योंकि हमें लगता है कि वी आर नॉट गिविंग, मतलब दे आर नॉट गिविंग ए प्रायोरिटी फॉर आवर टिश्यूज एंड वी आर नॉट गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल टिश्यूज। एक्चुअली बहुत सारे केसेस हमने देखा हुआ है, तो सर्जरीज वो बहुत ही फाइन अच्छा है, लेकिन इट इज नॉट लाइक टिश्यूज आर नॉट गुड ना। टिश्यूज आर नॉट गुड। वो मेरा भी वही एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक 3 इयर्स और 5 इयर्स डाउन द लाइन ना कॉर्निया डिकम्पोजिट हो रहा है। आइडियली 10 साल चलने चाहिए, 10 से 12 साल। बट व्हाट आई सीन इसकी 3 to 5 इयर्स इज व्हाट इज बीन देयर। सो मे बी थोड़ा सा अभी ना फिर मैं कैटरेक्ट कर देता हूँ मेनी टाइम्स। और एक चीज है सर, जो एएसजी कर सकता है एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल, दे कैन स्टार्ट डूइंग देयर ओन आई बैंकिंग एंड बिकॉज वी हैव फेलोज वी कैन स्टार्ट लाइक ये टेक मतलब टेकिंग कॉर्नियाज आल्सो। डॉक्टर मयंक, ये आप एक बार बात कर सकते हो, बिकॉज एज द कंपनी इज ग्रोइंग आई थिंक दैट इज द फर्दर वे टू गो अहेड, because if you only focus on people will who will like give us this thing, then it is very difficult to get good quality tissue which you want. ट्रू, Dr. वेरी Mayank, ट्रू। यस यस, होता एक क्या बार है कि बात करना ये, हाँ हाँ, क्योंकि ये हाँ हम कर सकते हैं एक सेंट्रलाइज्ड बैंक या some mechanism by which we will take donor corneas ourselves and we will process them ourselves. आई फील एक तो कोटा सर्टिफिकेशन तो देखो आपके सेंटर पे होना चाहिए, और फिर देयर आर फ्यू सेंटर्स जहाँ पे अपन लोकली भी प्रोक्योर कर रहे हैं। जैसे जोधपुर में ऐसा है कि वी आर कनेक्टेड विद फ्यू सोशल ग्रुप्स एंड एनजीओस, हम लोग खुद भी प्रोक्योर कर रहे हैं कॉर्नियाज, ऐसा नहीं। एंड आई बैंक से भी कोऑर्डिनेशन में है। तो दीज आर वेरियस एक्टिविटीज वी कैन इम्प्रूव ऑन, क्योंकि आई बैंक से कई बार कॉर्निया आती है तो वो डिपेंड करता है आप कितना क्लोजली कनेक्टेड है। जैसे हम राजस्थान का जो आई बैंक है उसमें वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन द ग्रुप वेयर द पॉइंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉर्निया वी कैन इंश्योर कि हमें चाहिए, मतलब वी कैन पुट आवर रिक्वेस्ट। आई सी अदर सर्जन्स आल्सो पुटिंग अप देयर रिक्वेस्ट इमीडिएटली। तो ये रिक्वेस्ट अगर इमीडिएटली हो गई जब, तो अच्छा कॉर्निया आने के चांस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज कई बार प्रोसेस्ड कॉर्निया होते हैं या कई दिनों तक ऑलरेडी आई बैंक में होते हैं तो उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है। ये सारे एफर्ट्स अपने को सबको ही लगाने पड़ेंगे एक्चुअली। तो लोकल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हों, पार्टिसिपेट करें। ट्रू है सर। बट आप लोग कैसे कर रहे हो वहाँ? आपके पास कहाँ से, आप यहीं से आ रही है, सेंट्रली आ रही है कौन है? सेंट्रली आ रही है सर। एक्चुअली हमने लोकली परचेज की थी 1-2 बार, बट द क्वालिटी हाँ, वाज नॉट वेरी गुड सर। बस तो वही ये भी प्रॉब्लम एक, आ रही है। हाँ हाँ, ये भी एक इशू है कि ना वंस और ट्वाइस आपको कॉर्नर यूज करनी होती है जस्ट टू गेट अ फील की व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ टिश्यूज। मेनी टाइम्स ना एंडोथेलियल स्पेक्युलर काउंट बहुत अच्छा लिखा होता है, ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है, बट जब आप कॉर्निया खोलते हो कॉर्निया एकदम वाइट होती है। सो दिस इज व्हाट हैज हाँ, हैपेंड टू अस इन। वो मैच करता ही नहीं है जो डिटेल्स उस पर लिखे होते हैं। मैच नहीं करता सर। एक्चुअली ना द अदर प्रॉब्लम इज ट्रांसपोर्टेशन आल्सो। यस, देयर हैव बीन मेनी स्टडीज ना जहाँ पे आप जितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट करोगे कॉर्निया को उतना एंडोथेलियल सेल लॉस बहुत ज्यादा होता है। आपके सो वहाँ अब तो हो रखा ऑब्वियसली, है ना सर्टिफिकेशन? हाँ सर, हमारे पास होता है। तो आई फील किसी ना किसी तरह से अपन कनेक्ट करने की कोशिश करें लोकल ऑर्गेनाइजेशन से जो आई डोनेशन द को बढ़ावा प्रॉब्लम दें। बट द प्रॉब्लम विद आई बैंक इज ना सर कि विल रिक्वायर डेडिकेटेड स्टाफ एंड हाँ इक्विपमेंट फॉर आई बैंक सर। एंड स्टाफ राउंड द हाँ, क्लॉक होना चाहिए फिर, क्योंकि आई कॉल तो कभी भी आएगी, हम्म। है ना। मैं इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप एक्स्ट्रा स्टाफ रख लीजिए। एंड यदि उनकी ट्रेनिंग नहीं है तो हम ट्रेन करवाने को तैयार हैं, क्योंकि हम्म। यहाँ
अपना स्टाफ जाता है जोधपुर में, आई बैंक, हाँ सर, यस और यस। काफी बार उसमें जरूर है कि जो क्या कह सकते हैं पुअर कॉर्नियाज भी उसमें आती हैं, कई आईज डिकम्पनसेटेड ऑलरेडी होती हैं, बट दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्रोसेस। तो ये चीज अगर करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कॉर्निया का, तो धीरे धीरे इस तरफ सोचना शुरू करो, स्टाफ एक्स्ट्रा यस सर। रखो एंड विल ट्रेन देम। हम्म। यहाँ पे जो कॉल पे जाते हैं उनके साथ भेजेंगे, उनको सारी चीजें अवेलेबल कराएंगे और विल ट्राई टू प्रोसेस इट, ट्रेनिंग भी ठीक हो है जाएगी, सर, है ना। ठीक है सर, मैं अभी जोधपुर आ ही रहा हूँ ना, एक बार आई बैंक देखते हैं कि क्या क्या जरूरत है और जोधपुर में कैसे क्या श्योर है। श्योर, यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल, ओके। ओके सर। ओके सर, आई थिंक थैंक यू। बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ एंड वी सॉ मेनी चैलेंजिंग केसेस, वी विल ट्राई आल्सो। अगर पता नहीं ऐसे केसेस में एक्चुअली आई इट इज इम्पोर्टेंट टू टेल कि लेंस डाल पाएंगे कि नहीं, या अदर like multiple surgeries may be required, that has to be explained beforehand, क्योंकि these cases are मतलब in very difficult, actually very challenging. वेरी ट्रू। I think we can close, sir. Thank you. थैंक यू यस, कौशिक। Okay, थैंक यू। wonderful. थैंक यू, थैंक्स एवरीवन थैंक फॉर यू द डॉक्टर क्लास। मयंक। Thank you.